अगर आपके स्किल नहीं है तो you cannot get away with procedures in anesthesia because all the procedures in anesthesia do impact directly the patient's life. सर इतना सब अचीव करने के बाद और सब ये MBA का एस्पेक्ट कहाँ से आया सर? You start your day with being a technician, then being an anesthetist, then being a computer operator, and then even being a housekeeping. सर ये कब किया आपने और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों किया सर? I needed a lot of skill management. That is one thing I was, and I, being an anesthetist, I have a little short temper to my side. So my PGs would vouch for it. सर लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा क्या अलग है? एक चीज़ बड़ी मुझे फनी लगती है, यहाँ लोग कहते हैं भाई आप उतना ही एनेस्थीसिया देंगे ना जिसमें पेशेंट उठ के आ जाएगा. Did they offer more money as well? हाँ, definitely they offered. Significantly more. Significantly, yeah, maybe it was twice the sum. So my wife is from Kerala, and she has a royal background lineage. Oh wow. So if you have seen these movies like Chennai Express and Tale of Two States, so I had to really fight it hard. And I didn't know whether I had the caliber to fight so many people. Which language do you converse in? So she speaks more better Hindi than me. अच्छा. She knows Hindi more than me. I can confess that I cannot write Hindi. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जिगर प्रत्यारोपण की बेहोशी. समझ में आया? नहीं आया? इसीलिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर आशीष मलिक को. सर इज़ द लीडिंग एनेस्थेटिस्ट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज इन इंडिया. सर ने मोर देन 1100 लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज में एनेस्थीसिया दिया है. सर अपोलो दिल्ली में कंसल्टेंट एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड multiple times, multiple awards, including the best clinician in the whole of India. Sir is a member of the most reputed societies of the world, including International Liver Transplant Society. उसमें तो sir is the first Indian in 32 years to become the anesthesia chair. And Indian Liver Transplant Society में तो obviously sir का नाम top पे आना ही था. Sir has taught multiple people, मल्टीपल ट्रेनीज, फेलोशिप प्रोग्राम्स बनाए सर ने. एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट इन इंडिया बट ही हैज़ द लाइसेंस टू वर्क ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ही हैज़ वर्कड इन फैक्ट इन कैनेडा, इन UK, कुवैत, म्यांमार, नेपाल. आई थिंक इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं भूल गया हूँ. आई कांट इवन मेमोराइज इट. तो आज तो बहुत सारी बातें हैं. वेलकम डॉक्टर आशीष मलिक सर. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you, Naman, for inviting me. सर अब आगे आप ही बताओ. मैं ही पूछता हूँ सर, एक काम करता हूँ. लिवर ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया सर, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, हाईली सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई. आपने पहली बात तो एनेस्थीसिया क्यों चूज़ किया? आप इस पे थोड़ा सा बताओ सर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू नमन. तो मतलब इट इज़ अ प्लेजर. मैं यहाँ हूँ एंड आई एम हेयर. एनेस्थीसिया क्यों चूज़ किया? आई डिड माई MBBS इन दिल्ली, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है. एंड उस टाइम पे जब मैं इंटर्न बना तो एंड ओवर द पीरियड ऑफ माई ट्रेनिंग मुझे दो चीज़ों से बड़ी दिक्कत होती थी. एक तो OPD में बैठना और पेशेंट्स को उनकी हिस्ट्री लेनी और फिर बाद में उनको फॉलोअप करना इतना ज़्यादा. तो मेरे लिए ये बड़ी थोड़ी अजीब सी लगती थी. और फिर मुझे हर वक्त ये लगता था कि ये इतना डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों बनाएंगे. आई वांटेड समथिंग विच वाज वेरी एक्यूट, समथिंग विच वुड प्रोड्यूस एक्टिव रिजल्ट्स, लॉजिकल एंड वुड बी एनालिटिकल, लॉजिकल. एंड अब वी हैव एन इलेक्टिव पोस्टिंग जो हमारी एनेस्थीसिया में होती है. तो मेरी भी 15 दिन मौलाना आज़ाद में हुई. एंड एट द फर्स्ट गो आई वुड से दैट मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा कि भाई मैं, बट मेरा बेंट ऑफ माइंड ऑलवेज वॉज टूवर्ड्स दी मेडिकल लाइन, दैट मीन्स डूइंग मेडिसिन. और सर्जिकल साइड पे मेरा कुछ नहीं था. सो वंस वी वर ट्राइंग टू, जब एंट्रेंसेस दिए, एंड एक्चुअली एंट्रेंस देने की तो हमें बचपन से आदत होती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो उस टाइम पे ऑप्शंस चूज़ करते हुए आई इंसिडेंटली मेट कर्नल चोपड़ा, who was a cardiologist of my father. And he is also the father of Deepak Chopra, who is a celebrated writer in US. And he suggested to me that I was discussing what PGs to take, and तो he suggested कि मेरा एक friend है, anesthetist है श्रॉफ आई सेंटर में, go and meet him. पर मैंने बोला कि but there are so many things to it
कि भाई हम बिहाइंड द सीन रहेंगे, हमें इतना नॉन फिगर नहीं बन पाएंगे, देन इट इज़ काइंड ऑफ अ मैनी थिंग्स जो मेरे सीनियर्स और एंड मुझे अपने घर से भी प्रेशर था कि एमडी मेडिसिन ले लो और कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है आपको। फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है आपकी? नहीं, मेरे एक अंकल हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है, बट ही वॉज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड वन ऑफ माई हिज डॉटर इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड फिर मेरे को उस वक्त सोचने में थोड़ा लगा, देन initially there was a very tough competition in Delhi at that time. So I came to an idea that I would always like something which will be acute. After talking to this anesthetist, and I got really impressed with him, कि at this young age he was doing very well according to the pressures of our profession. And he explained anesthesia in 2 terms to me, that you come in a car, that means you come in an AC environment, you work in an AC environment, and the moment you finish, you go back in an AC environment. तो एक जगह फुलफिलिंग मेरी तरफ हुई कि हाँ भाई मैं ये ओपीडी में बैठ के, ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं सर हम? ये ईयर 2000 की है, ओके, एंड 99-2000 की। तो देन आई गॉट एनेस्थीसिया, एंड क्योंकि मैं मुलानियन हूँ, मुलानाजाद से हूँ, तो मुझे मुलानाजाद में ही प्रेफरेंस लगी कि यहीं मैं कर लेता हूँ, और बाकी दिल्ली के भी कॉलेजेस में जाने के कोई मुझे इतना नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन टू द सिस्टम। राइट। फिर द मोमेंट आई एंटर्ड एनेस्थीसिया, in 2 months time I was very happy with the kind of क्योंकि फिर मुझे वो जो MD मेडिसिन मुझे लग रहा था कि वो OPD का जो systems थे, I used to feel, and then slowly I started enjoying this profession, क्योंकि everything was like an adrenaline rush. In anesthesia we say कि हमारे पास we have 3 minutes to act. If you don't act in 3 minutes, then the patient goes brain dead. So that's a big thing and a big challenge. Now there are 2 things to it. Some people can get stressed out of it, and some people feel happy about feeling that adrenaline rush and complications. And slowly over my PG, I developed this real interest in anesthesia. I would say at the start for 3 years, it was just about volume. But जब I moved on to All India Institute of Medical Sciences, then I actually realized what quality anesthesia is. बट सर ये आपको पिंच नहीं करता कि पेशेंट्स would only know, most of the patients would only know the name of the surgeon? This is one fact which is always there, and maybe slowly it is changing over the time. मेरे PG के days से लेके अब जब मैं senior consultant हूँ, but इसके ना 2 चीज़ें और हैं कि if you do good work and if you are able to save a patient, even one patient, it adds a lot of value in 2 terms. First of all, your surgical colleagues are extremely happy with what you have done. And the second thing is, now the patients' families and even now the awareness is very high. So they actually know what an anesthetist does, and especially जब ये COVID era आया, and we have dealt with so many issues, and how anesthetists and the other critical care guys have helped out and what they have done. I think that is one thing which has brought everything in limelight, and people are even aware of what are the super special qualifications of an anesthetist. And जब मैं OPD में PSCs भी करता हूँ, the moment you talk to a patient and you tell what is they will always say that yeah, we want you to be there only and nothing to be there. So I think it is very relative in terms. I think change हो रहा है sir. I agree. And for me personally, I would say कि मुझे ऐसा regret नहीं है, because I have been able to develop a mark on the academic front in on the international circuit, as well as the work in Apollo for 16 years as सर ये सुपर स्पेशलिटी की आपने बात करी, 2-3 चीज़ों का मीनिंग मैं जानना चाहता हूँ. क्रिटिकल केयर मेडिसिन क्या होता है और एनेस्थीसिया से अलग है, और एक चीज़ इंटेंसिविस्ट क्या होता है? तो एनेस्थीसिया पहले इस सबको इंक्लूड करता था. दैट मीन्स क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटेंसिव केयर. द एनेस्थेटिस्ट वर ओनली मैंडेटेड people to take care of any ICU. So slowly what has happened is, because the super specialization has happened in anesthesia itself, now everybody in anesthesia does not have an interest in intensive care. Right. People who are wanting to be acute and active want to remain in the operation theatre. Mostly. That is the thinking of the younger population. And even it's one of my thinking.
And intensive care requires actually a person to be regularly in that place and to give their whole attention to intensive care. But coming back to your question, so first of all, it was in the same gambit of anesthesia. Now it has become a subset of anesthesia. Critical care और intensive care में बाकी medical specialties के super specialists भी आ गए, जैसे respiratory medicine, general medicine, gastroenterologists also taking care of gastro liver ICUs. Right. But still, I would say for surgical patients which are operated, the best person to handle an ICU is an anesthetist, because he is very aware of what has happened during the surgery, उसके बाद क्या उसके complications हैं, और प्लस उसकी रिलेशन विद द सर्जिकल टीम एंड देन एंड आई थिंक एक और इसमें हम डाल सकते हैं कि वंस यू आर इन द ICU टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट्स डू नो यू, फैमिलीज डू नो यू, एंड योर नेम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स कि that is Definitely. the thing. And but अब ये है, because of the specialized environment, then there are people who just call themselves an intensivist. Maybe वो anesthesia background से हैं, but they remain in ICU and they have left the operation theatre. So that is the difference at the moment. Right. Sir, liver transplant में ऐसा क्या अलग है? Liver transplant anesthesia. तो मेरा सबसे पहला एक्सपोजर लिवर ट्रांसप्लांट का हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और उस 3 साल में मैंने एक ही केस देखा जो उन्होंने किया था. दे हैड पीपल हु वर ट्रेंड इन इट, एंड फॉर्चुनेटली मैं उस टाइम उसी OR में था. वी fought for the patient for 16 hours and unfortunately we lost after 16 hours because उस टाइम पे मैं ये बात कर रहा हूँ 2003 या 4 की, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेवल्स एंड उसमें वॉल्यूम, और तब हमारी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इतना डेवलप होता भी तब किस पोस्ट पे थे सर? मैं वहाँ सीनियर रेजिडेंट था. सीनियर पीजी आपने करी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, फिर मैंने 3 साल फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सीनियर रेजिडेंसी करी. सो वो मेरा पहला एक्सपोजर था, एंड आई सॉ दैट दिस सर्जरी इन्वॉल्व्स everything critical about anesthesia and intensive care. Okay. Right from pharmacology, physiology, physics, analytics, blood transfusion strategies, coagulation, हीमोडायनेमिक इम्बैलेंसेस जो इतने होते हैं कि कभी आपका 150 BP है, कभी 40 हो जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है. फिर एनेस्थीसिया इज़ बेसिकली ऑल्सो प्रोसीजर इंटेंसिव. अगर आपके स्किल नहीं है तो you cannot get away with procedures in anesthesia, because all the procedures in anesthesia do impact directly the patient's life. It is not कि मैं अगर ये दवाई दे रहा हूँ तो ये इससे मेरा ये ठीक नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, पेशेंट को कुछ होगा तो नहीं ना. यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आप नहीं ठीक से कर पाएँ तो पेशेंट की लाइफ भी हैम्पर हो सकती है. प्रोसीजर जैसे सर? कोई सेंट्रल लाइंस डालनी है. सबसे पहला आप जब एनेस्थीसिया शुरू करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, आपने लंग की जगह उसको इसोफेगस में डाल दी और आप नहीं, और ये कई चीज़ें आप सुनते हैं, और जनरल पब्लिक में ये होता है अरे भाई एनेस्थीसिया दिया था उससे बाहर ही नहीं आया. एक चीज़ बड़ी मुझे फ़नी लगती है, यहाँ लोग कहते हैं भाई आप उतना ही एनेस्थीसिया देंगे ना जिसमें पेशेंट उठ के आ जाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया से पेशेंट मर जाता है. और एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग टू हैपन, एंड वो है बिकॉज हमारे यहाँ लोगों की अवेयरनेस बड़ी कम है. एंड सो डॉक्टर्स की अवेयरनेस भी कम है. हाँ, डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस कम है, बिकॉज दे सम इफ एवरीथिंग इज मैनेज्ड वेल, लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें कितनी ब्रेन लगती है, क्योंकि देखो इसमें गैजेटरी इन्वॉल्व बहुत है. इट इज़ लाइक एनी IT फील्ड, यू कुड से दैट इट इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर. द एनेस्थीसिया मशीन इज जस्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर. अब एनेस्थीसिया लिवर ट्रांसप्लांट में इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि हम OT के अंदर, मैं खुद भी इकोकार्डियोग्राफी करता हूँ, जो मुझे उसकी भी नॉलेज है कि भाई इसको किस तरह से मैनेज करना है और क्या है. सो आई कैन डायरेक्टली सी द हार्ट माई सेल्फ. डायलिसिस हमें शुरू करना है तो हम करते हैं, और देर आर अदर डिफरेंट मॉनिटर्स विच एक्चुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल इन अंडरस्टैंडिंग. और अगर आप इस चीज़ में वीक हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनेस्थीसिया, और एटलीस्ट लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं आइए. देर आर अदर ब्रांचेज ऑफ एनेस्थीसिया विच कैन फुलफिल योर ड्रीम्स. हाँ सर, हमने भी पढ़ी है इंटर्नशिप में वो बॉयल्स मशीन और क्या क्या. इट्स नो इजी थिंग. अब ये मशीन्स इस तरह हो गई हैं कि दे विल बी, मतलब इट्स जस्ट आई एग्री सर. एंड इफ सपोज यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट कैन हैपन, यू विल लूज द पेशेंट. सर, लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो फिर क्या करना है? क्या ऑप्शंस हैं?
एनेस्थीसिया में और बहुत सारी ऑप्शंस हैं. अब इसमें अगर देखिए आप मेरे कुछ कोलीग्स को ये चीज़ ठीक पसंद नहीं आएगी, पर मैं मजाक में ही कह रहा हूँ कि अगर आप सोना चाहते हैं एनेस्थीसिया में तो आप क्या कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया कर लीजिए या पेन मेडिसिन कर लीजिए. राइट. तो यू विल हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफ, खुश रहेंगे आप. एंड आई वुड ऑल्सो से मजाक में अपने दोस्तों को मैं ये भी कहता हूँ, यू आर नीडल किंग्स, कि कभी कभी आप नीडल लगा के सो जाते हैं. So सही that बात is, but to come to the serious point of view, it is pain is actually a very good branch, and you can either have acute pain fellowships, or you can have chronic pain fellowships, which is there. Other parts of anesthesia which are now are pediatric anesthesia. You have fellowships in obstetric anesthesia. You have fellowships in what do you call regional anesthesia and blocks specifically. Then you could transplant का तो खैर actually हर जगह the program is the same, that it includes liver, kidney. अब solid organs में बाकी सब भी involved हैं, hollow organs में intestines हैं, pancreas and solid organs. Then cardiac anesthesia is a very old सर ये field. सब अभी ये आने लगी हैं या these were there when you were senior नहीं, resident? जब मैं senior resident था तो there were only 3 branches. Okay. Cardiac anesthesia, general anesthesia, neuro anesthesia. कार्डियक, जनरल और हाँ. न्यूरो. ओके. और जब मैं एम्स से निकलने वाला था तो डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया पोस्ट डॉक्टरल शुरू हुई थी. एंड आई थिंक आई वाज ऑफर्ड द सेकंड सीट ऑफ द डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया. ओके. पर मेरा तो कार्डियक में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दैट. बट दीज वर सम ऑफ द मेजर सुपर स्पेशलिटीज एट दैट टाइम. अब मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ एनेस्थीसिया की, तो कुछ साल पहले आप अगर डिप्लोमा करते थे एनेस्थीसिया में तो आप एनेस्थेटिस्ट बन जाते थे. ओके. इन माई टाइम इट चेंज कि भाई डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है, एमडी तो होना ही चाहिए. नाउ दैट एमडी पे लोग रुक जाते थे एंड दे कुड गेट अ गुड प्रैक्टिस, एंड वो प्रैक्टिस कैन बी इन एवरी फील्ड. एंड फिर व्हेन आई स्टार्टेड माई सीनियर रेजिडेंसी या उसको ख़त्म करके आगे चलने की बारी आई तो एनेस्थीसिया में सुपर स्पेशलिटी आ गई. और सुपर स्पेशलिटी अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि हर ब्रांच को बेसिकली अब आप ये देखिए डीएम ऑन्को एनेस्थीसिया भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं. सो हाँ, सो देर आर पीपल हु आर नाउ स्पेशलाइज्ड ओनली इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एनेस्थीसिया. एंड आई थिंक अगर मैं लिवर ट्रांसप्लांट में आपको बोलूँ कि सुपर स्पेशलिटी, जैसे मैंने फेलोशिप करी कनाडा से, तो उस फेलोशिप के बाद अब मेरे पास और क्या ऑप्शन है इससे ऊपर जाने का. तो मैं ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी में अमेरिकन बोर्ड से बेसिक और एडवांस्ड का फिर 1-2 साल का कोर्स कर सकता हूँ. सो इट इज़ लाइक मेकिंग यू एज सेल्फ सफिशिएंट. एंड इवन देर आर फेलोशिप्स इन जस्ट लिवर ट्रांसप्लांट critical care, where after the surgery. Yeah, that is the critical care part of it, because that is also the most important point of a patient outcome. Right. And तो अभी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आप इंट्रा ऑपरेटिव पार्ट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया देखते हो? नहीं, अभी अपोलो में तो हम इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप भी देखते हैं. पोस्ट ऑप क्रिटिकल केयर भी आप क्रिटिकल केयर ही हम देखते हैं. तो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं जो आईसीयू मैनेज करते हैं, और जब हमें बाकी सर्जिकल टीम के साथ राउंड्स पे और वो सब डिस्कस करना है या क्या है. बट हमारी जैसी इन्वॉल्वमेंट पहले दूसरे तीसरे दिन तक रहती है, जब तक पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है, एंड देन द हेपेटोलॉजिस्ट टेक्स ओवर. फिर सर सीनियर रेजिडेंसी के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस थे, आपने कौन सा चूज़ किया? उस वक्त तो मैंने इजी वे आउट सुना. हाँ. कि भाई अब यहाँ क्या करें. ठीक है. अब सीनियर रेजिडेंसी के बाद या तो आप यहाँ पे जूनियर कंसल्टेंट बन जाएंगे या कुछ और लेवल पे आइए. मेरे को पहले से ही काफ़ी था कि मैं बाहर जाऊँ इंडिया से. ठीक है. तो उस टाइम पे इन द इनिशियल फेज फॉर 2 years आई टुक अ जॉब इन कुवैत. तो उस मेरे डिपार्टमेंट में कुछ 10-12 लोग जा रहे थे, एंड उसमें somebody was born and brought up in कुवैत, तो उसने बोला कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस. अब लक वाज दैट जब मैं लैंड किया, आई वाज द लास्ट वन टू गो देयर, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपना प्लैब दे रहा था. तो मैं जब यूके गया, एंड यूके में मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, बट मैंने जब देखा कि ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे इनका यूरोपियन यूनियन का रूल था, एंड द जॉब्स फॉर एनेस्थेटिस्ट वर नॉट फ्रीली अवेलेबल. इससे पहले तो द एनेस्थेटिस्ट हैड जस्ट टू टेक अ वीज़ा एंड लैंड इन यूके, एंड दे विल एंटर द एनेस्थीसिया ट्रेनिंग एंड बिकम कंसल्टेंट्स. एंड many of my seniors and my batchmates may also be there now at the moment. But it all stopped when I entered. So I said it's better to go and have a exposure abroad.
And when I landed in Kuwait, I landed in a kidney transplant center. Okay. So उस वक्त तक तो I was very confused. I was also a intensive care guy. So I used to always think कि हाँ भाई I'll also do critical care and I'll be in the ICU in charge and all those things. Okay. Now Kuwait was a country which gave me a taste of both. एक तो it was kidney transplant. That was one thing. Second, they had 4 ICUs which an anesthetist had to manage. And I got so bored of the ICU. Because in an ICU setting, there is one big drawback because there is a lot of carryover on your mind. And if you are not mentally strong, it can make you very, very depressed. Because it's a life and death situation. You lose patients which you don't like. It is some of the unfortunate things. But that exposure made me very clear that I don't want to do critical care. And it's not my piece of cake. Kidney transplant hua, so then they started, they were thinking of liver transplant. And they said कि because आपके पास you have a GMC license, जो General Medical Council का है, so we can send you to UK and maybe you can have a look at King's, which is the very big center for liver transplant. Exactly. तो मेरा पहला एक्सपोजर वहाँ हुआ, right? हाँ लंदन में, एंड मेरा एक्सपोजर और बड़ा वहाँ. मैंने थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वेंट एज आई वाज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इट वाज माय आई ओपनिंग एक्सपीरियंस आई मस्ट से. ओके. एंड मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता रहा लिवर में एंड बट आई नेवर न्यू दैट आई विल बिकम, आई स्टिल डिडंट न्यू. मेरा उस वक्त भी प्लान था कि आई एम गिविंग सम एग्जाम्स एंड आई एम पुशिंग ऑफ टू वेस्ट. दैट्स व्हाट बेसिकली वेस्ट मीन्स यूएस. And so I started with my MLE and all those things at that time. But then अभी कौन सा ईयर हो गया सर? This is in 2008 की बात है, 7 or 8. Okay. And it is by stroke of luck or whatever you say. Maybe at that time मुझे थोड़ा अजीब लगा because I had to cut short my events abroad. My dad was not well and I had to come back to my country. तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे को वही सैलरी ऑफर करी जो मैं सीनियर रेजिडेंट था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, मतलब आफ्टर 3.5 to 4 years. एंड अगेन आई वुड से दैट मैंने सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल के बारे में सुना था एंड आई हैड लर्नड फ्रॉम मैनी पीपल दैट it is the best group of anesthetists available in the country. And actually, I would say that it is true. I think it's still true. हाँ, it is true. And I think मेरी जो grooming और मेरी जो awareness है और मेरी जो enhancement हुई है, it has a lot to do with my exposure in Apollo and a very sincere support from my senior consultants. So I joined as an attending consultant here and I became the youngest senior consultant in the department. So जब मैं यहाँ आया तो I saw one of the biggest names in liver transplant, Dr. Subhash Gupta, operating on a liver transplant. And I was very amused that this OT has only 2 anesthetists. जब मेरा last exposure था एम्स में, in King's की बात, एम्स में जो पहला हुआ था, I would say there were about 15-16 anesthetists in the OT. Wow. With about 15-16 of surgeons. Now where is the patient? And it was like, I didn't know what is happening here. कि ये कोई सब्जी मंडी है या क्या है. बट जब मैंने अपोलो में देखा 1 consultant and 1 junior consultant, the managing liver transplant, you have this stupendous surgeon who's also ex-AIMS, and so that was my first exposure and I started liking it. I think the moment I did my first case, I felt that this was something to do it. And I learned from the 4 senior consultant anesthetists who were doing liver. Not everybody does it. It's not for everybody's temperament because it has long working hours, strenuous hours. कितने लंबी चलती है सर एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी? It can vary. ये 6 घंटे से 16 घंटे के बीच में कभी भी हो सकती है. और अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मैंने 30 घंटे तक भी कराई है. So there are a lot of things which are there. But that's how I developed my interest in liver transplant. And मुझे ऐसा लगता है आफ्टर डूइंग 1 केस इट गिव्स यू, इट्स लाइक अ होलसम पैकेज. कनाडा का कहाँ से आया सर इसमें? हाँ, अब मैं जब यहाँ था लिवर ट्रांसप्लांट में, सो आई बिकेम एन यंगेस्ट कंसल्टेंट हियर इन 2010 एंड दैट इज बाय द सपोर्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डिपार्टमेंट. एंड देन मेरे को क्रेडेंशियल्स के लिए अप्लाई करना था लिवर ट्रांसप्लांट के. Now, we had consultants who were trained from abroad, basically UK, who came here. Right. And
So they told me that you can enter the liver transplant pool once you have a fellowship from abroad. क्योंकि इंडिया में फेलोशिप नहीं थी at that time. तो आपने किंग्स में किया था, वो फेलोशिप वो काउंट नहीं, नहीं वो हुआ? ऑब्जर्वरशिप थी, because I Okay. was on rolls of the Kuwait government. Okay. And I just went because they sponsored me, and I was like it was not a Right. fellowship at that time. Okay. But then I asked who's been my guide and mentor in Apollo also. He's also a liver very senior person, Dr. Sanjeev Aneja, who's also a liver transplant anesthetist, and he has done his fellowship from Toronto. Okay. So we were having a chat, and he said to Canada apply kar, because US के लिए तो तुझे पूरा MLE करके and then fellowship 2 साल की है, and so Canada में मैंने अप्लाई करा, and then तो एमएलई तो आपने दे दिया था ना, या नहीं दिया था अभी I तक? had not completed at that time. ओके, तो स्टेप्स हाँ, बच रहे थे. मेरा स्टेप 1 हो गया था, एंड उसके बाद देन मैंने आई हैड टू ड्रॉप इट बिकॉज मतलब आई हैड टू कम बैक टू इंडिया. राइट, राइट. So then I looked around in Canada, and Canada has a very good name in liver transplant. So and मैं जैसे ही अप्लाई किया तो मे बी आफ्टर 2 years of waiting I got. So that's one of the things which helped me move. And it was for a year and a half or a year or maybe, and I think it gave me the best exposure in liver transplant. I think मेरी management इतनी refine हुई, though we were doing a lot of volume in India and we were doing only living donor liver transplants, but the Canadian exposure and working with those 5 consultants who were there, a part of the team, and plus working with the father of Canadian liver transplant, the surgeon who founded liver, it was a massive experience for me. And in just now in Houston Congress, May, I was fortunate enough to meet him. We have done after his retirement. So it brought a sea of change in my management, my thinking, my aggressiveness. And I will say that मेरा नाम A से शुरू होता है, and there are 3 letters which I would always put: anesthesia, Apollo, and aggressiveness. Wow. So I would say that it is some kind of a justice I have been able to do landing up in liver transplant. ग्रेट सर. कनाडा में फिर वापस आने का कनाडा क्यों में बनाया फिर ये plan? था कि दे सेड कि आपको हम कंसल्टेंट बना सकते हैं with another year of fellowship, but it will be neuro anesthesia. Now Oh, they would not make you a it was consultant. liver then. was it was a very strict pool. They didn't have any area, any seat available at that time, because there was a Canadian fellow who was doing liver transplant, so they had to adjust him, the Canadian Makes sense. medical graduate. And then मुझे पता नहीं अब उस वक्त क्या था, but I asked my mom, and she said नहीं, you come back. And I was on leave from my department, so basically it was I wanted to come back. Maybe I was thinking I should stay, but my mother said नहीं यार, you come. And in one way or the other, it turned fortunate for me, because if I had stayed, in 10 months' time, I lost my mom. So I would never have had that opportunity to stay with her till her last days. फिर आके सीधा अपोलो ज्वाइन किया आपने कनाडा से? अपोलो. I came back here. I started working, and then तो अपोलो में प्लेस अभी भी आपके लिए थी या बनाई नहीं थी. I must say that maybe I'm the fortunate of less than 1%. I agree. That एक तो place भी, and my salary was also the same. मतलब it was safeguarded. Okay. There was nothing. We have a very different salary structure in Apollo, and it was actually like a fixed insurance for me, and that is actually a big thing. So when I came back, I started working, and soon I was promoted as senior consultant, and then I would say liver is my only life in anesthesia. इस अभी आप अपोलो में थे, इसके बाद कनाडा से आप अपोलो वापस आ गए एज अ कंसल्टेंट, देन यू बिकेम अ सीनियर कंसल्टेंट इन लिवर ट्रांसप्लांट. जो ये 1100 का नंबर है, ये आपने अपोलो में अचीव किया. हाँ, मेरा फर्स्ट केस these are cases as an independent consultant. So in how many years did you get this this 1100 is number? the first case I did was on 1st September 2011, and ये मैंने मार्क क्रॉस किया, मतलब 1000 I crossed giving liver anesthesia
to liver patients in Myanmar. अच्छा. That was through Apollo because Okay. it is the Apollo group which was handling the transplants, and we helped up building transplants in different countries. So Myanmar is one of them. And I did my 1000th liver in Myanmar, which they celebrated with great Wow. matlab, I was like Celebrity. blue-eyed boy for all of them. And then ये अब मैंने more than 1100 means I नहीं, ये कौन सी ईयर में, म्यांमार कौन सी ईयर में था? म्यांमार ये था क्या कहते हैं लास्ट ईयर. लास्ट ईयर. ओके. सो आपने नेपाल में भी किया है सर? हाँ, मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच डिड द फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांट इन नेपाल. उनका एक हॉस्पिटल है जो TUTH कहते हैं, इट्स लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन इंडिया. So the first liver transplant was done by us, and I was fortunate enough to be the liver transplant anesthetist for that case. So that is, and then the subsequent programs we developed in Nepal also, the same team. कौन कौन सी कंट्रीज में कर लिया सर एज एन इंडिपेंडेंट सीनियर कंसल्टेंट? नहीं, नेपाल और म्यांमार में तो गया मैं, और पाकिस्तान में जा नहीं पाया बिकॉज इट वाज अनफॉर्चुनेट एट दैट टाइम बिकॉज आई लॉस्ट माय मॉम. ओके. सो मैंने थोड़ा अपना ट्रैवल रोक लिया था. एंड दीज आर द मेन कंट्रीज वेयर वी हैव डेवलप्ड. पर सर आप कनाडा में भी तो एज कंसल्टेंट गए थे. मैं कनाडा में कंसल्टेंट अभी रिसेंटली गया था. ओके. इट वाज द सेम लिवर ट्रांसप्लांट ग्रुप व्हिच इनवाइटेड मी. दे हैड अ पोजीशन. एंड मेरी थिंकिंग थोड़ी उस वक्त ये अब होने लगी थी कि मे बी फॉर माई डॉटर आई शुड, एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. नाउ अब मेरे को बिल्कुल क्लियर है व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली मीन्स. इट इज़ नॉट सिटिंग एट होम एंड एन्जॉइंग 5-day week. सो एंड प्लस मेरे कुछ फैमिली भी है वहाँ कनाडा में सेटल्ड, एंड आई हैड सीन द कंट्री थ्रू. आई हैड वर्कड इन द सेम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, and I was also keen कि हाँ भाई this could be a good thing. But I think over the years India has changed, especially in liver transplant or whatever it is. So did they offer more money as well? हाँ, definitely they offered Significantly more? Significantly, yeah, maybe it was twice the sum. Wow. But then money in terms of, now I know the reality, what terms. If you ask a person to do 3 times the work, so you pay him 2 times, it's plain and simple business. वहाँ ज़्यादा काम था सर? वहाँ पे जो देखिए, आपको यहाँ आदत है कि आप डॉक्टर हैं, तो आप OT में आते हैं, एंड एज अ सीनियर कंसल्टेंट आपके टेक्नीशियंस भी होते हैं आपको हेल्प करने, आपके जूनियर कोलीग्स भी होते हैं, प्लस यू आर देयर, यू मैनेज द केस, यू आर बेसिकली टेकिंग अ एडवाइजरी रोल मोस्टली एंड ट्राइंग टू स्टीयर द शिप इन मडी वाटर्स. राइट. Now, what I have seen in Canada, or especially in the North American environment, you start your day with being a technician, then being an anesthetist, then being a computer operator, and then even being a housekeeping. So for that work, till you leave the patient to the recovery, if you are paying somebody twice, I'm not very sure whether it actually translates into monetary value or loss of human value. That's makes sense sir. so, or because it's not just money. ये काम करना भी क्यों है? At this level, you would not want to do the technician and job. then it is a very individualistic society. मतलब even at the personal front, you have to do everything on your own. कॉफी भी सुबह की खुद ही बनानी है. तो अब जैसे मैं गया, मतलब I also was, see, हर वक्त हमें thinking होती है कि the pastures are very green abroad. And we actually, though I am not that kind who will rush into this because I love my country and I have stayed here for a very long time. And fortunately, the resources and everything is fair enough for me. But अब मुझे भी लगा कि हाँ वहाँ जाएंगे, मेरी बेटी की एजुकेशन होगी, मेरी बेटी की कुछ होगा, and then I am getting a consultant post, and then it's an active interest in liver transplant. So when I reached and I saw the situation, it actually changed my mind that as an acute intensivist, or you'll say anesthetist, I took a decision within a month that it's not my cup of tea. But you can go to Canada and you have the license to work in Canada. I have the license to work there. I can maintain that license till I want it to be. It's all monetary aspects of it. And visa? Visa is there for about 2 years or whatever it is. But that will depend on what is there. And even I have the license to practice in UK also.
ओके, So which I am maintaining it, but करना तो शायद नहीं अब है. I don't think I will ever. I had my fill, I would say. तो अब कनाडा सर यूजुअली जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे कलीग्स हैं या जूनियर्स हैं, थोड़े सीनियर्स हैं, यूएस ज़्यादा जाते हैं, यूके बहुत जाते हैं, और जर्मनी कुछ जाने लगे हैं. बट कनाडा आई रियली डोंट नो एनीवन. तो आपको क्या लगता है, इज़ इट बेटर, इज़ इट वर्स, इज़ इट या और स्पेशली आज के सिनेरियो में? So ये जो है प्रोफाइल टुवर्ड्स वेस्ट, I think at different stages it will have a different meaning. Maybe as a young person it should be a dream destination, maybe. मतलब in the कौन terms, सी एग्जैक्टली सर? I अगर think आपसे आज एक पोस्ट पीजी पूछता है, इन एनी ब्रांच फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट एनेस्थीसिया, मैं भी पूछता अगर कुछ साल पहले, तो आप कौन सी कंट्री बोलते हैं? नहीं, I would definitely say US. यूएस. I would definitely say US. Because I think अभी भी वहाँ multilinguality and all those aspects are still there. And as a, if you are at a junior level, the kind of growth you will have will be better than many things. I But agree, sir. I would just say that at my level, it's not. It does not translate in the same thing because we You have are already हाँ, established and we here, have already seen the growth here. right? And You have created the growth. You're one of the pioneers, sir, in liver. So, अब उसको now is the time to reap benefits. Now is the time, I believe, to enjoy the fame you have. So, अब क्यों जाना है? नहीं, और जब मैंने जाके बाहर फेलोशिप करी तो मैं यही सोचता था कि वाई इंडिया डज नॉट हैव अ फेलोशिप. हाँ. So I think in Apollo I helped formulate the Apollo fellowship by Apollo in liver transplant. We started having fellows. Now we have reached a stage that जैसे liver transplant society of India है बनी 2018 में. So I was the founder, executive, governing council member of Anesthesia, and I helped formulate a pan India fellowship. So we didn't have fellowships all over, which was accredited all over India. And this got stamped, the curriculum was made, it was formulated and pushed into action after 2 years. Now we have LTSI fellows for 2 years, and then once they get a certificate, that means it's a standing that you can get a job anywhere in the liver transplant center in India. Because always हम यही सोचते थे वेस्ट में फेलोशिप है, it is the American board which should tell us. And I will share my experience about all those aspects being on the International Liver Transplant Society as the anesthesia chair, that what kind of parameters we have and how we are trying to put our voices down. And that's actually not done. And from there, this thought process has even reached the International Liver Transplant Society. And that society thought, जब मेरा last year term था, to form a liver transplant anesthesia fellowship curriculum. So I have drafted that also. And For the international society, you have बिकॉज अभी drafted तक the इट इज़ curriculum. कंट्री स्पेसिफिक. अब Right. यूएस बोर्ड में है वो पहले से कर रहे हैं, कैनेडियन बोर्ड में है वो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस अलग कर रहे हैं, ठीक है, एंड यूरोप में अलग है. तो एक इंटरनेशनल हाँ, सो ये common बिकॉज वी हैव एन guideline. इंटरनेशनल लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी which is global and which was formed in 1992. So there was no fellowship program accredited by the society, and if we have that, it will be very good. And I've just finished with formulating the curriculum aspects. It will go through its process, and I hope maybe 1-2 साल में वो भी एक्टिवेट हो जाए. सर इतना सब अचीव करने के बाद और सब, ये MBA का एस्पेक्ट कहाँ से आया सर? यू हैव डन, जितना मुझे पता है, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस. सर ये कब किया आपने, और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों किया सर? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आई गॉट मैरिड वेरी लेट. ओके. सो आई गॉट मैरिड इन 2017. उससे पहले मेरी कोर्टशिप चली 5 साल या मे बी 6 साल. So how is that And late? As how in- is that related to an MBA? No, how is that late? Late as- means मतलब usually people would marry at 30 or maybe between 30 to 35. So I got little late on that. Okay. And it was a love marriage. The aspects which I am bringing you is why MBA. So it's just little adding little humor to it. So my wife is from Kerala, and she has a royal background lineage. Oh wow. So if you have seen these movies like Chennai Express and Tale of Two States, so I had to really fight it hard.
and I didn't know whether I had the caliber to fight so many people. Oh, Not physically. क्या एज थी सर आपकी? When I got married, Yeah. so 41. Okay. So that is there, and my to say that it's about 41. Yeah, and there is a good difference in age between me and my wife. Though our thinkings are exactly the same, our tastes are same. We belong to different states who have never met each other. Right. And I think it was great that thing happened, and but well, I needed a lot of skill management. That is one thing I was, and I, being an anesthetist, I have a little short temper to my side. So my PGs would vouch for it. That if people don't do work according to what, and I can really go to their level. Achha, I have never seen you angry, sir. No, in but Operation if Theatre. people see the angry side, they will vouch for it. It's one and whatever it is. So skill management was one thing. Then I was in a corporate sector. I never thought that I'll be in a corporate sector. So, but when in a corporate sector, you have to need finance skills, you need marketing skills, you need behavioral skills, and which was difficult for me to put in force. But yeah, I survived it. And it is my wife that suggested that और कोई डिग्री क्यों नहीं करता है, मतलब something which is different. Which language do you converse in? No, she speaks more better Hindi than me. Achha. She knows Hindi more than me. I can confess that I cannot write Hindi. Achha. Because I belong to an ICSE board. Okay. And even Hindi was taught in English. So it was, and I have grown up reading Shakespeare and all those things. But, and just now I had to give a lecture in Hindi. She wrote it down for me. Okay. So it's because maybe my father-in-law is from the Air Force, so she has roamed around a lot in that. Okay. So she said ki, and then we were on our honeymoon, and I had filled this form up. I don't know the reason. The day we landed on a Saturday from our honeymoon, the second Sunday was the entrance. So I went, and she said, if you are up to it, go. Okay, I'll go. And incidentally, my roll number was 007. Wow. I was facing the wall. I didn't know. And the best part was I didn't get the roll number with myself. Because I just walked in. So this MBA guy came, the teacher, and he said, where is your printed part? And I'm like, oh, we don't allow phones in. And you want to go? So I said, no, I want to give it. So okay, then we'll do something about it. And when I opened the booklet, it was like an exam which included English, which included general knowledge, which included your matrix, mathematics, and it was just like anything other than medicine. And I did something. Then I got out to the hall and I saw an old man walking towards me, and I realized this old man is a batchmate of mine. He's a vascular surgeon. So I said, why are you here? So he said, why are you here? So I said, let's see. We heard that it's an MBA. No, the other distinction I'll make is there is something called hospital administration, or that is mostly the people do that. Right. It is MHA. MHA. But MBA is healthcare administration. So I wanted different. I wanted to do a course which this MBA was 2 years. Okay. And it gives you a gambit of a normal MBA. So 1.5 years is like normal MBA, and the last 6 months is like healthcare. So it is towards, an aim is towards the other role, that is the CEO or the CFOs, or basically on those. It's nothing to do with the director medical services, and that's very boring for anybody like me. Okay. So I wanted to give it a try, and when the list was put up, I was third. And we had an interview. Sir, maths कैसे कर लिया? How did you manage mathematics? I managed accounts also. Wow. And I got good marks in accounts, where everybody was about to flunk. So, wow. And then आप ऐसे subjects पढ़ते हैं, economics, finance, accounts, and see, I think it's a wonderful degree, and especially medicos should do it. I would say the kind of awareness and the kind of intellectual expansiveness, I would say. Okay. See, I would always say that as a medico, I had a very conceited thinking. Because we are trained to be just with the books, pass the exam, give the entrance, do this. It's like काफ़ी लोगों को ये behavior थोड़ा मतलब यही चलता रहता है. And this really made a lot of difference.
for me. इन व्हाट सेंस सर? डिफरेंस कैसे? मतलब फर्स्ट थिंग व्हाट आई अंडरस्टूड, आपको जरूरत तो नहीं थी. नहीं थी. You were excelling already, हाँ. and you were going all over the world, making experiences, seeing the life in different perspectives, जो आप कह रहे हो. हाँ. So you are already, I think, getting the perspectives. You are already meeting people, networking भी हो रही है, excel भी कर रहे हो, patients भी recognize कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है. तो फिर क्यों? जरूरत तो नहीं थी, पर आपने किया. ओके, एट विम. तो आई विल से दैट एक कंसल्टेंट थे मेरे साथ कुवैत में, ही वाज आल्सो एन इंडियन, यूके ट्रेन्ड, एंड ही सेड रोलिंग स्टोन्स, इफ यू हर्ड, गैदर मॉस. Gather no moss. No moss. Right. No, at that time, initially the saying was they gather moss. If you are a rolling stone, अच्छा. so it was like jack of all trades and master of none. He made this statement to me that rolling stones don't gather moss. Maybe at that time I had heard that it was all moss. So that I kept in mind for a very long time. Then, as a bent of mind, I wanted to do something away from medicine, and during my Canadian fellowship, I came across a lot of Canadian anesthesiologists who were trained in anesthesia, or they would have done PhD in statistics or something or in public Okay. health, or maybe an MBA also. So maybe that idea started getting into my head. And मुझे ये लगा कि see, I strongly believe anesthetists are the best managers. Of Right. course. In my hospital in Apollo also, you have an anesthetist who's the operational manager in Right. charge. So, because we are used to managing so many things from many things. And then, जब ये हुआ, तो I said कि let's give it a try. But I had a shock of my life. I thought it was something to do with the weekends only. And they said the roster is up. Every day you have to come from 6:30 to 8:30. And on Saturdays, you have to come from 3:30 to 8:30. Now, a person who's just got married and is involved in a very sensitive field and has many things to take care, then going and traveling from one part of Delhi to another. But I think within a month, I understood it is an education which... See, I did a lot of networking there also. I met a lot of good people at different positions and pedestals of their life. Be it dentists, be it be hardcore clinicians, be it be engineers, be it be economists, be it be army people, forces who want to do it. And Why were army people doing healthcare? नहीं, they were अच्छा, doing 1.5 साल का तो कॉमन common था. Oh, right, right. So right. उसमें so MBA is basically a management. Whether you take a management at a personal level or whether you want to do it on a different level. तो सर, बट इस MBA से आज की डेट में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? MBA करने के बाद तो मैंने सोचा नहीं, बिकॉज आई एम अ वेरी हार्ड कोर क्लिनिशियन. क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, लोग देख रहे थे कि आइदर यू लीव योर क्लिनिकल फील्ड कम्प्लीटली एंड यू टेक अप अ काइंड ऑफ अ मैनेजरियल पोस्ट इन अ... सो बट बिकॉज अवेयरनेस थी, नेटवर्किंग थी, देन मुझे पहली बार समझ आने लगा कि what is KPMG and what is Deloitte and what are these consultancy firms and that. And so then there were some very good subjects which I liked. That one was healthcare analytics and one was behavioral management. Basically, it's the management of psychological management of managers and all those things. So I had somebody with me who was already doing an MBA to get a degree, but he had a very established business setting, and the idea started floating. And then during COVID time, I think he said, I need somebody who can give me an input from the healthcare aspect. So I said, I asked him the question, how can I help? So कहते, you don't have to come, Zoom पे ही कर लेंगे, and you have to look at cost reduction in healthcare, because I do take up some consultancy for different, even NHS was involved in that. So how to cut costs, and that is what business is all about. But he said, I don't have anybody who was so professional enough in healthcare who could give me a guide to it. So that's the beginning of the idea. And then slowly 4-5 people joined together. They put in resources, I put in some brains, and you look at the healthcare verticals in different firms and try to cut their... not in a stream से आपको income हो रही है.
हाँ, नेटवर्किंग भी चल रही है. It's like a parallel income stream you have created. Yeah. How much effort do you have to put daily? no, not daily. अभी तो I am on you can say SOS basis. So अच्छा. if you want to put it daily, then you have to leave medicine. So that's one thing which is helping me out, and actually more than monetary, it's helping me in looking at different. See, when you would sit with the so-called MBAs in a hospital setting, they always feel the doctor is a fool. He doesn't understand the basics about it. Now I know what they're talking about and what they're Right. trying to do. And you can have people who can cut all these things in a very healthy way. You should not think about. So, and artificial intelligence, that's also really caught my eye. And maybe the next one would be looking at something to do with artificial intelligence. अच्छा. So the idea was, क्या सर थोड़ा सा बताओ. see, artificial intelligence जो धीरे धीरे आएगी, basically it will come in medical field also. It's like you put algorithms together, and with different algorithms, you would get outputs which would give you a new. Like I would say that I had just a lecture done on artificial intelligence in anesthesia and intensive care. So you would have a robot intubating. That is one thing. Then you have pumps which run on artificial intelligence algorithms. वो data calculate करके. So I would say that they cannot take over a human, especially in anesthesia. But in intensive care also, अगर आप manage कर रहे हो, managing sepsis or something, so they can put all the data, they can put all the updated versions, and will give you something of a solution which might help you in a crunch situation. So I think this is the next thing that will happen, and I was very happy to take these 2 lectures during. So maybe my next degree would be in artificial intelligence. Great, sir. So guys, ये थे डॉक्टर आशीष मलिक, a leading anesthesiologist for liver transplant surgeries and an MBA. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा and you have gained something valuable out of it. If yes, then please like, share, subscribe, comment. जो आपको अच्छा लगा है, जो आपको अच्छा नहीं लगा है, जो आपको आप चाहते हैं और कोई क्वेश्चन पूछना हमसे या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट में लिखिए. एंड इफ़ यू थिंक यू बिलोंग विद अस इन दिस पॉडकास्ट तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. सर, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कितनी इनकम होती है आज की सिचुएशन में? तो इट इज डेफिनेटली मच बेटर देन व्हाट आई वाज एट दी. एंड हाउ मच मनी डू यू मेक फ्रॉम द साइड थिंग you have got going, this MBA? No, as an MBA, I might also take some lectures here and there, so that's government schemes. अच्छा, it's not alcohol, it's non-alcoholic reason जिसके लिए ट्रांसप्लांट हो रहा है. और ये अब एक पूरा एंडेमिक टाइप बन रहा है. मतलब यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का रीजन मोस्टली ये नैश है. ट्रांसप्लांट से बचने के लिए ये लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं सर, इतने सारे हर्बल लिवर टीज हैं. But I think there is nothing herbal about it. There is nothing Ayurvedic about it. They don't do anything to do with detoxification. So next future trend is AI and this xenotransplant. And my dream for AI is कि मैं घर बैठ के एनेस्थीसिया दे सकूं. किसी पेशेंट्स ने कभी रिपोर्ट किया है वाइल्ड ड्रीम्स आफ्टर एनेस्थीसिया? रिपोर्ट बिल्कुल किया है. मेरे साथ अपना ऐसा इंसिडेंट हुआ है. एक का तो डाइवोर्स करा दिया था मैंने. अरे क्रेजीएस्ट एनेस्थीसिया मिथ व्हिच यू वुड लाइक टू बंक? The anesthetist comes in, gives an injection, walks away. सैलरी कितनी है? जो पे आपको मिल रही है, सो उसमें एक मीडियम साइज गाड़ी आप खरीद सकते हैं. सर, स्लिम लोगों में भी होता है क्या फैट लिवर? और वो यूजुअली उनमें होता है जिनके अंदर हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल. सर, ट्रांसप्लांट के बारे में बताओ. हाउ, फर्स्ट थिंग, हाउ एक्सपेंसिव इट इज? नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में बिटवीन 20 to 30 lakhs. और सर, इसके फेलियर रेट कितने होते हैं? फर्स्ट ईयर सक्सेस रेट इज बिटवीन 85 to 90%. इसके ऑर्गन डोनर्स कैसे मिलते हैं? हमारे यहाँ पे तो मान्यता है कि हम डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे.